6.17. The bob A of a pendulum released from 30° to the vertical hits another bob B of the same mass at rest on the table as shown in figure. How high does the bob A rise after the collision? Ignore the size of the bob and assume the collision is elastic. So dear students, in this example, according to our figure, mass of the bob A and B की बात है, which are the same. ये m है and ये भी m ही है, okay? But A वाला bob है which is making angle 30° with the vertical, okay? And ये जो है ये portions which is considered as a what? This is our table, ठीक है? That means यहाँ पे हमारा bob है, यहाँ पे इसके साथ collide हो रहा है, and we have to assume that our system is what? Elastic system, okay? Elastic collision हो रहा है, that means चलो, so the collision which is elastic such that A comes to the rest. क्या हो जाएगा? A जो A है वो इधर आ जाएगा and B क्या हो जाएगा? B which is begun to move with the velocity of A. समझ में क्या है? ये 30 एंगल बना रहा है, यहाँ पे है. Then our system is what? Collision किसका है? किस टाइप का है? Elastic collision है. तो ये यहाँ पे आ जाएगा and B का क्या हो जाएगा? Which is begins to move with the velocity of A. ठीक है? So the bob transfer its entire momentum to the ball on the table and it does not rise at all. Alright? चलो. Now we have to discuss about the another example. Example 6.18. The bob of a pendulum is released from a horizontal position. If the length of pendulum is 1.5 meter, so what is the speed with which the bob arrives at lowermost point, given that it is depreciated 5% of initial energy against the air resistance? So in this example, what are the given data? Given data में क्या दिया हुआ है? Height is equal 1.5 meter दिया हुआ है, and also they are given that it depreciate 5% of initial energy. What it losses हम बोल सकते हैं. Okay, 5% of initial energy against the air resistance. Because of the air resistance, उसकी जो energy है वो depreciate हो रही है. कितनी? 5% है. ठीक है? चलो, तो that means ये हमारा according to our figure, ये हमारा bob A positions पे है. Okay, horizontally according to given data में A positions पे है. ठीक है? So ये यहाँ से यहाँ आएगा. तब यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो किस में होगी? वो हमारी वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी. किस में? पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे आ जाएगा तो विच इज कंसिडर एज अ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. ठीक है? सो 5% तो लॉस हो रहा है. सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है क्या? वी फाइंड आउट करना है. वी कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू द 95%. क्यों 95%? बिकॉज 5% तो लॉस हो रहा है. सो यहाँ पे हमें क्या कंसिडरेशंस करना है? 95% ऑफ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए. ठीक है? चलो, सो वी ऑलरेडी नो अबाउट द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हमें पता है 1/2 mv² इज इक्वल टू 95%. दैट मीन्स व्हाट? 0.95 multiplication of potential energy, and potential energy which is equal to what? mgh. ठीक है? तो ये mm तो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो v² का इक्वेशंस क्या हो जाएगा? v² इज इक्वल टू ये 2 इसके मल्टीप्लिकेशंस में जाएगा. सो 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0.95 मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द g 9.8 मल्टीप्लिकेशन ऑफ h कितना है हमारा? 1.5 मीटर. सो अभी सिंप्लीफिकेशंस करना है. सो वैल्यू ऑफ द v इज इक्वल टू व्हाट? ये स्क्वायर है, देयरफॉर हमें क्या करना पड़ेगा? इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा. जो भी वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0.95 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9.8 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1.5 एंड आवर आंसर विल बी v इज इक्वल टू इसका अंडर रूट जो भी वैल्यू आएगी इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा हमें. सो आवर आंसर इज 5.285 एंड यूनिट मीटर पर सेकंड. तो ये हमारा v की वैल्यू आ जाएगी. Example 6.19. A trolley of mass 300 kg carrying a sandbag of 25 kg is moving uniformly with a speed of 20
7 km per hour on frictionless track. After a while, sand starts leaking out of a hole on the floor of the trolley at the rate of 0.05 kg per second. So, what is the speed of trolley after the entire sandbag is empty? So here trolley and sandbag जो है which is moving with a uniform speed. That means trolley and sandbag behaves as a isolated system. So there will be no change in the speed of the trolley. That means the speed of the trolley remains the same, which is equal to 27 km per hour. Example 6.20. A body of mass 0.5 kg travels in a straight line with velocity v is equal to ax raised to 3 by 2, where a is equal to 5. So, what is the work done by the net force during its displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter? So in this example, what are the given data? Given data में v is equal to ax raised to 3 by 2, where a is equal to 5 we have to consider. M is equal to 0.5 kg. Displacement x is equal to 0 meter to 2 meter. So we have to find out the work done. So work done, that means W हमें find out करना है. So पहले हम find out करते हैं for the small displacement dx. Okay, for small displacement हम considerations करते हैं dx. तब हमारा work done को हम डिफाइन करते हैं dw से इज इक्वल टू, एज वी नो दैट, फोर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट. चलो, सो फोर्स के लिए हमें पता है कि फोर्स F इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू ए, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है. सो देयरफॉर वी हैव टू राइट dx. ऑलराइट, चलो, सो m एज इट इज. एक्सेलरेशंस एक ही जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dv बाई dt, एंड ये dx एज इट इज है. ओके, यहाँ पे अभी हमें ध्यान रखना है dx डिवाइड बाई dt. क्या dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से, वी कैन राइट v. ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं dx डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू, वी हैव टू कंसीडर एज अ v. सो देयरफॉर m v इनटू dv. तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी फॉर दी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. हमारा वर्क डन जो होगा वो dw इतना रहेगा. बट वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन, दैट मींस कैपिटल W. सो कैपिटल W इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ विच वन, dw. ओके, एंड लिमिट कौन सी रखनी है, लिमिट कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 से लेके 2. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2. Alright, चलो, now we have to put all the value dw की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, वही इधर अभी हमें लिखना है. सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 2. चलो, m v dv. ऑलराइट, m बाहर निकल जाएगा, m एज इट इज. चलो, इंटीग्रेशन ऑफ v dv. सो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, v स्क्वायर डिवाइड बाई, एंड लिमिट कौन सी है, यहाँ पे लिमिट x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 है ही हमारी. सो ये m तो एज इट इज रहेगा. ऑलराइट, ये 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, एंड v होल स्क्वायर रेज टू x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2. v की वैल्यू हमें पता है, v इज इक्वल टू ax रेज टू 3 बाई 2. सो ax रेज टू 3 बाई 2. ओके, तो अभी इसका सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो m डिवाइड बाई 2 इनसाइड द ब्रैकेट क्या, a स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा x रेज टू 3. क्यों, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 2. ऑलराइट, चलो, नाउ यहाँ से हम a स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं. सो m डिवाइड बाई 2 a स्क्वायर x क्यूब, एंड लिमिट कौन सी है, 0 टू 2 है. So therefore m divided by 2 is square, higher limit minus lower limit, that means what, 2 cube minus 0 cube. Okay, and also we have put all the value. m की value given data में है 0.5 kg.
So 0.5 divided by 2. Multiplication of A is equal to 5. Okay, and 2 raised to 3. 2 raised to 3 कितना होता है? 8 होता है, and minus 0 है, so therefore 8 ही रहेगा. So अभी इसका simplifications करना है, तो ये 4 यहाँ पे हो जाएगा. Okay, and our answer is 50 joule. And unit of the work का किस में होता है? जूल में होता है. So that's why we are writing 50